moon's surface with its craters and crevices becomes a tapestry that speaks of cosmic cycles, change, and the dance of celestial bodies. Just as Chandrayaan-3 seeks to unravel geological secrets, ancient Indian wisdom invites us to explore the metaphorical depths of the moon's symbolism. The moon's waxing and waning mirrors the eternal ebb and flow of life. Its luminous radiance amidst the darkest nights reflects hope, strength, aspiration, and guidance in the face of challenges. As Chandrayaan-3's journey nears its pinnacle, it's a celebration not only of technological prowess, but also of the continuum of human curiosity and exploration. The threads of ancient Indian knowledge are interwoven with the fabric of modern space science, illuminating the moon's significance through time, encouraging insightful, futuristic explorations of the Milky Way for the enduring global good, universal prosperity of humankind, and all species of sustainable economy, ecology, and environment, which is symbolized by the great personality of Honorable Narendra Modi. Ahead of the developed world, it is India's maiden global achievement to soft land Chandrayaan-3 space mission unexploded South Pole. This demonstrates undivided attention, inspiring support, and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, complemented by collective technical excellence of the Indian scientific community led by ISRO. सर, इसरो के वैज्ञानिकों का श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, असामान्य एकाग्रता, प्रचंड साहस, दृढ़ निश्चय, दुर्बार संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्र और अखंड साधना के कारण और हमारे विजनरी लीडर, राष्ट्रगत प्राण, अद्भुत सामर्थ्य का अधिकारी, असंभव के महानायक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण यह संभव हुआ है. When Russia, a great country like Russia, failed, India succeeds. सर, भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र है साउथ पोल में चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए. सर, आज कुछ लोग बोलते हैं इसको कुसंस्कार, हमारा पूर्वजों का जो सारा कीर्तिमान, जो आविष्कार, इसको कुसंस्कार मानते हैं. सर, विश्व में जब कोई सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, आधुनिक यूरोप और अमेरिका के पूर्वजों ने जब अरण्य में अपने को नीले रंग में रंजित करके विचरण करते थे, भाषा भाव में संकेत के द्वारा भाव विनिमय करते थे, कभी कभी खाद्याभाव के कारण नरमांस भी खा जाते थे. सभ्यता का उस उषा काल में जिसका भेद करने में दंत कथा भी असमर्थ है, इतिहास तो नहीं है, उस समय में हमारा देश में एक चमत्कार सभ्यता संपन्न, संस्कृति संपन्न राष्ट्र का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सारा विश्व में ज्ञानालोक वितरण करने का स्पर्धा पोषण करते हुए किणुंतो विश्वमानव का उद्घोष में विश्व का गगन को गुंजायमान किया था. हम उनका स्पर्धी उत्तरदायी थे. कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, समस्त विषयों में जिन्होंने विश्व का गुरु पद में आसीन थे, उस राष्ट्र का हम स्पर्धी उत्तरदायी थे. सर, हमारा देश में कभी नया विचारों का विरोध नहीं किया गया. हमने बराबर नित्य सत्य का अनुसंधान को प्रेरित किया है. ये सारंगी जी, अब समय. सर, मैं तो थोड़ा सा आरंभ ही किया है. मेरा बारी पहले था, 2-3 फिर टर्न हुआ, फिर मेरा नाम आया. सर, व्हाट इज साइंस? सर, द प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन इन व्हिच वी लिव इन is the product of a particular discipline of human mind known as modern science. And what is science? Sir, science can be broadly divided into two different parts. First is pure science, then is applied science. And pure science is nothing but a pursuit, a search after truth. A search after unbiased, unprejudiced, free from all dogmas. Search after truth of nature. And applied science is an invention developed after these findings of the search after truth. Sir, so Chandrayaan is also an invention developed after these findings of the truth of pure science. Sir, now I can say that India has developed such truths ages ago which modern science may take ages to rediscover. हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किया
इसमें यह विराट पुरुष का आविष्कार हुआ। चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य जायत। The vastness and the oneness of the universe is the unique discovery of our sages ages ago. Sir, I would remember one incident. A great scientist, a Nobel laureate in physics, an American physicist, Dr. John Hobson, he wrote in a book that Swami Vivekananda posed a challenge to modern science when he asked, can we activate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. While explaining the philosophy of Sakya and Vedanta, Vivekananda told American scientists that your science is incomplete. Since your investigation stopped on 2 points, you could not discover the unity of human experience. Your knowledge, your experience could not proceed further. That is energy and mass. You could not unify them. But he explained how our sages ages ago discovered this unity in cosmic intelligence. From lowest atom to the highest Brahman, how the entire process ran, Vivekananda explained it very scientifically. Referring to this incident, John Hobson told that. And this truth was discovered that energy and mass are 2 different aspects of the particular, a single truth discovered by Albert Einstein after passing 3 years of passing away of Swami Vivekananda. Sir, इन सब विषयों में सपोज शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में तो गणित का कितनी असहाय अवस्था होता। रसायन विद्या का भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, संगीत शास्त्र हो, कणाद मुनि का अणुशास्त्र हो, चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, ये सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार भारत में ही है। सर, संपूर्ण भूमंडल में भारत का सम्मान बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी के कारण। कुछ लोग कहते हैं हम तो वैज्ञानिकों को सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी को क्यों? प्रताप सारंगी जी, एक मिनट, इट्स वेरी, एक मिनट, it's very informative, knowledgeable, but time doesn't permit. That is a problem. That's concerned. Kindly conclude. Sir, we fully appreciate, but at the same time, time doesn't, because 24 more speakers, and the minister has to respond. Sir, kindly cooperate with the chair. Yes. Sir, हमारे देश में सम्मान ऐसा बढ़ा है कि हमारे वैज्ञानिकों ने माननीय मोदी जी के प्रेरणा में कोविड वैक्सीन आविष्कार किया और कोविड वैक्सीन को मोदी जी ने सारा विश्व में वितरित किया। कुछ लोग कहते हैं विश्व में क्यों देते हो, हमारे देश में देते हो। सर, इस युग है दुनिया का एक्सपेंशन का युग है। विवेकानंद कहते हैं अनसेल्फिश इज लाइफ, सेल्फिशनेस इज डेथ। हेल्पिंग अदर्स इज लाइफ, नॉट हेल्पिंग अदर्स इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इंडिया वाज वीक, नोबडी रेस्पेक्टेड हर। इंडिया बिकेम स्ट्रांग, अमेरिका रेस्पेक्टेड हर, ऑस्ट्रेलिया रेस्पेक्टेड, द वर्ल्ड रेस्पेक्ट। सर, चंद्रयान मिशन में हमारी सफलता, थैंक यू, ये हमारा विस्तार का, हमारा शक्ति का नमूना है। और माननीय मोदी जी ने घोषणा किया कि ये हमारी ये सफलता सारा विश्व का ज्ञान भंडार को समृद्ध करेगा, न केवल हमारा देश का मोनोपोली का विषय होगा। सर, इटर्नल सनातन धर्म जिसको आज कुछ लोग विरोध करते हैं, ये अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, बोलते हैं सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक दो, ये डेंगू, ये मलेरिया, ये HIV। सर, हम इसको सहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा धर्म ये सहनशीलता का वैशिष्ट्य हमें देता है। बाकी कुछ धर्मों के बारे में बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा स्वामी विवेकानंद ने घोषणा किया कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन which has sheltered the persecuted and the refugees of all the nations and of all the nations around. Sir, we take pity on them. We take pity on their knowledge. Those who say we are separate, we belong to Ravana race. Sir, Ravana was an Arya Santan, son of Vishrava Rishi. He was accepted as the Purohita by Ramachandra in Setu and the Pratishtha. They do not know the history of the nation. The whole nation is one. Bhagavan Vyasadev वेदों का संकलन किया, अष्टादश महापुराण का रचना किया और व्यास सूत्र वेदांत सूत्र का रचना किया, श्रीमद् भागवत का रचना किया, श्रीमद् महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का रचना किया, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता को संयोजित किया। सर, भगवान व्यासदेव का माता एक धीवर कन्या, ट्राइबल लेडी, और उनका पिता ब्राह्मण पराशर मुनि। इसलिए वेदों के ऊपर ब्राह्मणों का जितना अधिकार है, वनवासियों का भी उतना अधिकार है। अति प्राचीन काल से वंशगत सम्मिश्रण हुआ है। सर, मैं कहना चाहता हूं, ये जातिगत विद्वेष फैला करके भारत को खंडित करने का जो कोशिश कर रहे हैं,
ये हमारा राष्ट्रघातक है। सर, ये अपना ज्ञान का दारिद्र्य के कारण अपना अत्याचार को दूसरों के ऊपर स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन धर्म अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, इसको विध्वंस कोई कर नहीं सकता है। और हमारा धर्म ही सारा विश्व को स्वीकार करता है। सारा विश्व का अत्याचारित समुदाय का आश्रय स्थल है सनातन धर्म, यह भारत भूमि। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लक्ष्य एक है, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। यह हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, सारा विश्व का हमने समादर किया। सर, trust the eternal Sanatan Dharma propounded by our sages and gurus guide us to realize, appreciate and acknowledge the harmonious blend of ancient wisdom and modern innovation. Chandrayaan-3 success stands as a testament to humanity's unceasing quest to reach the unreached, uncover the uncovered, the unknown, bridging the realm of old and new, ancient and modern, and embracing the moon's wisdom that has inspired generations both past and present. सारा देश, सारा विश्व इसके लिए गर्वित होता है। कुछ लोग इधर गर्व नहीं कर सकते हैं। सर, इनको कुछ बीमारी हुआ है, जो भारत का गौरव में गर्व अनुभव नहीं करते हैं। जो कहते हैं वी हैव कंसीव्ड द आइडिया ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बट दे कुड नॉट डू। They have conceived the idea of women reservation bill that they could not do. They could not make delivery. They conceived the idea. It passed away. We conceived, we furnished, and we delivered. So that is the credit of Manyava Narendra Modi ji. With this I conclude. Sri Dean Kurias Kosh ji. Sir, Madam, thank you very much, Madam, for getting this opportunity. And I would like to start. Madam, we heard so many speeches here, and I would like to point out how BJP people politicizing this matter, Chandrayaan. We heard Honorable Member Tejasvi Surya's speech just before. Unnecessarily, he criticized Pandit Jawaharlal Nehru and Congress party. Madam, we don't want the certificate of them, but history is there. Whatever Pandit Jawaharlal Nehru did, whatever Indira Gandhi ji did, whatever Rajiv Gandhi ji did, whatever Narasimha Rao did, whatever Manmohan Singh ji did, that is in the history. And the difference of opinion is, unnecessarily they are claiming India became independent after 2014. That is the difference of opinion in this matter also. Madam, we would like to point out this matter. It is a proud of nation, and they are mentioning another political issues also. Honorable Member Tejasvi Surya pointed out Nambi Narayan issue, the great scientist, and he connected that matter with Kerala Congress party also. Madam, what was the issue? We condemned what happened to that great scientist. That issue has happened at that period, but it was connected to a court case. That was the most unfortunate incident. What is the role of Congress party in that issue? This is the problem of BJP, and they are unnecessarily claiming it is their only credit. That is, we are criticizing now. Madam, I am coming to the point. I am coming to the subject. First of all, I would like to congratulate the people of India, especially the hard-working scientists of ISRO, the great Indian universities that produced them, and also the people who came before them who laid the strong foundations for this success. When the Chandrayaan-2 suffered a setback, India was sad only for a day. Deep inside, we all knew that ISRO will bounce back. That is the great Indian spirit of coming back stronger after a failure. The traditions of Indian science exploration were established along with the Constitution. The term scientific temper was coined by Pandit Jawaharlal Nehru, and it is part of the English vocabulary now. It finds mention in our esteemed Constitution too. This is an opportune moment to discuss what we are doing to promote scientific temper across the country.
Madam, this success of Chandrayaan-3 is a moment of great pride for the people of Kerala as well. From the beginning, Kerala has played an important role in the story India's success in space sector. The very first rocket launch in India happened at Tumba, Trivandrum. The hard work of scores of Malayali scientists as well as local residents was what made the launch so successful. From there, we never had to look back. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India and the rocket man of India, is almost like a Malayali. He spoke fluent Malayalam and also built his career at Kerala, where he created a large body of work in service of the nation. Most of the great achievements of the ISRO was done when it was headed by Malayalis. I would like to gratefully remember the stellar tenures of Dr. K. Kasturirangan, Dr. G. Vadhavan Nair, Dr. K. Radhakrishnan, and the Madam, I just started. The present chairman, Dr. T. Somanath, is a proud child of Kerala, having completed his education from the state itself. Madam, 26 companies from Kerala have contributed to the manufacturing of components used in Chandrayaan-3. Out of these, 6 are public sector companies and 20 are in the private sector. A lot of manufacturing has done in facilities like that are situated in Valiamala, amongst others. It is a matter of pride for us to be able to contribute to this like that. Madam, grand success like that of Chandrayaan-3 helps boost the positive image of science in the minds of people. But as the news fades away, that achievement is pushed to the background. We need to have consistent engagement with the people to ensure that the message is always communicated to them. We need to build on the successes like this and make sure that children are attracted to the science. Also, being a scientist is a dream for millions of Indians, but hardly a handful of people know it from the childhood on how to work towards that aim. This has to be addressed at the earliest. Madam, science is everywhere. And concluding, just allow 2 another minutes, Madam, please. Science is everywhere, but science education is not. If we are to look around, the marvels of this world is a gift of science. However, to truly appreciate that, the people of India should have a dedicated science museum close to them. A science museum at the state capital can serve only so many people. My humble submission is that there should be a mini science museums and science center at every Lok Sabha constituency. Every school in the constituency should be tried to this science center. Is it that you are allowing to contradict each other? Was it a part of a discussion or you are allowing to contradict each other? इन बात के लिए आपके पास टाइम है. हमने पूछा तो 4 बजे का समय दिया था. अब कितने बजे? चुप कर बैठे इसका मतलब हुआ है क्या? मार्शल चलाता है या चेयर चलाते है? ये भी तो एक बार मालूम करना चाहिए. इसके बाद आपका है. जस्ट इसके बाद आपका है. घबराई नहीं बच्चे. इसके बाद आपका है. आपका है. शांत रहिए, शांत रहिए. इसके बाद आप बात कीजिए ना. बैठिए जी, बोलिए जी. मरगनी भारत जी बोलिए. Ma'am, we are the 4th largest party. We have ample time, more than 10 minutes. Kindly may permit me. Please. Ma'am, at the outset, I thank the chair for permitting me to speak in this important discussion on the success of Chandrayaan-3. Ma'am, today I stand here to acknowledge the remarkable achievements of Indian Space Research Organization. Ma'am, as we look at the stars, everyone must be filled with everyone must be filled with immense pleasure and pride, ma'am, for the accomplishments of ISRO. These testaments of our scientists, it's years of hard work, persistence and dedication, ma'am. Dr. Abdul Kalam said and dreamt that India should be a prominent player in the space exploration. As my friend rightly said about Abdul Kalam ji, he was recommended by Mr. Chandrababu Naidu, but never Abdul Kalam ji mentioned about this. And these people are proclaiming that we have appointed Mr. Abdul Kalam. It's so sad, ma'am. And one more thing, the ISRO remarkable achievements in the space exploration with the success of Chandrayaan-3 and as well as the first lunar exploration is Aditya L1, ma'am.
The ISRO journey, which began in 1969, has been nothing short of extraordinary, ma'am. Ma'am, the ISRO provides services like the weather forecasting, broadcasting, networking, navigation, and geographic information, and so on. But the Chandrayaan-3 soft landing on the moon, on the lunar surface, solidifies the India's dominance in the space sector, ma'am. Earlier in 2019, with the failure of the Chandrayaan-2 and the Russians module also the same, the lot of pressure with our scientists, and finally, when the Vikram lander headed on the surface of the moon with 6,000 kilometers speed, which is 10 times faster than a plane, which is unimaginable, ma'am. To land in that speed on the earth is unimaginable. But our scientists had made really hard work and also the complicated maneuver to land on the surface of the moon. And when the countdown was going on, it was really nerve-wracking, ma'am. From each minute, when it is dropping down to the surface of the moon, be it 50 kilometers, 40 kilometers, every minute it is coming down. And finally, to landed on the moon when the chairman of the ISRO, Mr. Somnath, has announced India is on the moon. So every people in the country, and rather all the people in the world, waited for this particular spectacular situation has happened, which is landed on the moon, ma'am. And as we speak, ma'am, the India's rover drove down on the moon, on the south pole of the moon, and perhaps no other country in the world has landed on the south pole. And today, our scientists really made a great. No one have ever expected, the whole world never expected this kind of situation with the Indian scientists will happen. And the Indian scientists have made. And really, I wanted to express here, ma'am, my daughter, which is 6 years old, Jaini, she told me that, Nana, we are on the moon. And my mother also said, when are we going to the moon? And this, all things resonate, that everybody has owned this. All the people on this, all our country people have owned this, ma'am. And really, I appreciate and wholeheartedly appreciate the team ISRO and also the Honorable Prime Minister for this great thing happened, ma'am. The total spending of Chandrayaan-3 is about $75 million, which is lesser than the Boeing 777, and also even lesser than the bigger Hollywood films also, ma'am. And also, I would like to mention here, ma'am, the Vikram lander and also Pragya, the rover, will be heading soon under the dynamic and able leadership of the Honorable Prime. Ma'am, 10 minutes I've asked. We are having time, enough time, ma'am. Ma'am, with these words, from the words of Dr. Vikram Sarabhai, the visionary founder of ISRO, ma'am, and I quote, "The space is not just a destination, but a frontier of endless possibilities," ma'am. Let's not forget the historic moment when the Prime Minister announced the landing site, the Chandrayaan-3, would be named Shiv Shakti, ma'am. The name Shiv Shakti signifies our deep-rooted cultural reverences, and also the recent, the Luna, the recent Aditya L1 also, it's truly remarkable, ma'am. And coming to the recent, one of my good friends from TDP has mentioned, ma'am, give me 1 minute of time. Give me 1 minute of time. Mentioned, he was just thinking about, the chair has asked to speak about Chandrayaan, but he is thinking about his leader, Chandrababu Naidu. And I wanted to mention here, the Chandrababu Naidu was arrested with a scam of 3,300 crores. 3,300 crores, where the Siemens has confessed. When the CID has intervened,
under the section of IPC 164 of CRPC, Siemens said that we have nothing to do with the MOU of the skill development. And now I wanted to mention here, sir, ma'am, the Mr. Naidu has arrested under the relevant sections of criminal conspiracy, cheating and dishonesty, forgery. In addition to that, CID has invoked the Prevention of Corruption Act. And these all things had happened, ma'am. More skeletons will tumble out from the Chandrababu Naidu's closet, and TDP is the party of miscreants. And TDP is resorting to the crimes and 352, Madam, 352. Rule 352. Ma'am, Rule 352, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. He's talking about a case which is pending in the court, madam. Madam, according to this rule, you have to expunge everything that he has spoken. Madam, this is a case that is pending in the court. According to Rule 352, according Shri Arvind Samba ji, अरे बैठ जाओ. थैंक यू चेयरमैन मैडम. मैं आज मेरी वेदना प्रदर्शित करता हूं. पहले जिस ढंग से पार्लियामेंट चल रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए. सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट. एक सेंटेंस में समझ जाना चाहिए. पहली तो बात, लेट मी हार्टली कांग्रेचुलेट श्री सोमनाथ जी, his entire team of ISRO, the scientists and all those ancillaries who were supporting the functioning of the or launching of this satellite. There was BSNL also. Let it be very clear from this also. And therefore I heartily congratulate on behalf of my party, my leader, Uddhavji Thackeray, and millions of followers of him. Madam, every one of us know that the Vikram Sarabhai, during the regime of Nehru, who thought of space research, an Indian committee on space research was formed during the regime of the Pandit Nehru ji. मुझे इतना ही बताना है कि उतना सब होने के बाद में आज भी हम 75 साल में क्या हुआ, ये हमारा डायलॉग है रोज का. अब पता चला होगा आज तो 75 साल में क्या हुआ. 60 साल पूर्व इसरो की बनाया गया. अब इसरो बनने के बाद में आज इस जो मंजिल हमने पाई है उसकी सराहना 140 करोड़ जनता तो करती है, पूरी दुनिया कर रही है और उसका हमें प्राइड है. इट्स अ रियली प्राइड मूवमेंट फॉर एवरी वन ऑफ अस इन द कंट्री. उसमें और एक बताता हूं कि कितनी छोटी बातें कैसी होती है मैडम, कि जब से यह चल रहा है संशोधन, तो एक चेन्नई के एक साइंटिस्ट जो कुछ साइंटिस्ट है, उसका नेम है चेन्नई बेस्ड एमेच्योर स्पेस एंथुजियास्टिस्ट नेम षणमुगा सुब्रमण्यम, skilled in image analysis, identified the location for lander debris, and NASA later confirmed it. वो जो डेब्रिस गिरा था वो कोई इसरो का नहीं है, वो स्पेस का ऐसा ही उसका संशोधन करता है. इतना मतलब लोगों के रगों में गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसकी सराहना जितनी करी उतनी कम होगी. मैडम, यू एवरीवन ऑफ नो दैट अभी आदित्य भी है. कुछ लोगों को आदित्य नाम से भी डर लगता है आजकल, पता नहीं है, लेकिन हमारे ये अच्छा हुआ कि आदित्य एल की वहां गए हैं. वो आदित्य एल जो इमेजेस बनाता है उसमें VLCC करके विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफी एंड सूट सोलर अल्ट्रावायलेट मैनेजर, ये सोलर वाले जो सूट बनाते हैं SUIT, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स is done by Pune Institute. So this is everybody is contributing on all these things. I mean अब जब मैं विक्रम साराभाई जी की बात कर रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस is and the Colombo Observatory is in my constituency, it is in Mumbai. आज मुझे उनकी याद आती है, अब्दुल कलाम जी की और खास करके इंदिरा गांधी जी की. जब राकेश शर्मा जी गए थे तो वो एक फोन पे बात हुई और राकेश शर्मा जी से पूछा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान आज दुनिया में सबको पता चला कि हिंदुस्तान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है. चांद पे गया, अब सूरज को भी उसकी भी
जान ले, उसकी भी रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमारा ऑर्बिट लैंडर उधर बड़ा खड़ा है, वहां आदित्य एल लैंडर ऑर्बिट में खड़ा है। अब आज सुबह जो बातें हुई उसको थोड़ा सा स्पर्श करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से हाथ जुड़े हुए, सही है। धर्म किसको कहे, ये बात आती है मन में कि जब हम सावरकर जी की बात करते हैं तो उन्होंने खास करके धर्म के बारे में व्याख्या की है। धर्म क्या है, हिंदू नाम कैसे गिरा, सिंधु से हिंदू कैसे हुए। तो ये सारा जो है, अभी हमारे सारंगी जी बताए, सही है। हजारों वर्ष से हमारे पास आया है, हजारों वर्षों से है। हमारे तुकाराम, संत तुकाराम जी का एक अभंग है, अणु रेणु या तोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा, मराठी में। अणु इट्स एन एटम, रेणु, so all those things have been there in our, I can say, epics, in your granthas, in your all those abhangas, it is existing. लेकिन इसमें एक बड़ी बात आपने कही, उसका मैं खास करके आपको धन्यवाद देता हूं। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई छोटा से है तो उससे क्या ध्यान देना है। हम जहर को हम नहीं फैलाना चाहिए, हम जहर को फैलाना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं मुझे लगती। संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा, ये श्रद्धा जो बात है, श्रद्धा क्या है, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। 2 मिनट में खत्म करता हूं। हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। हमारे हिंदू मंदिर में जाता है तो भी हिंदू है, नहीं जाता तो भी हिंदू है, पूजा करता है तो भी हिंदू है, भगवान को नहीं मानता तो भी हिंदू ही है। यही तो बड़प्पन है अपने। हम परिवर्तनीय हैं। हमारे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी रहे, शाहू फुले अम्बेडकर जी, ये सारे परिवर्तनीय थी। इसीलिए तो धर्म में जो परिवर्तन आया वो बड़ा स्वागतपूर्ण है। और अब जब हम, इसलिए मैंने सावरकर जी का जरा सा जिक्र किया, ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं कि इसको लेकर हम राजनीति खेल रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा की जब बात करते तो मैंने अभी एक बात कही और दूसरी बात और भी करना चाहता हूं कि उन्होंने सुबह एक बात कही कि वहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में जो बचे उन लोगों ने बद्री विशाल की जय कहा। अच्छी बात है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है उनकी, लेकिन जो मर गए उनका क्या करे, वो किस पर श्रद्धा जताए, वो किसको बुरा कहे। तो इसलिए हमारा धर्म समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है। टेम्परामेंट एंड साइंटिस्ट, वो जो बात है वो ज्यादा स्वागतीय है, मान लिया उसको। और मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से चंद्रमा पर हम गए हैं और सूरज की हम संशोधन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा इसरो और देर करेगा। एक दिन आएगा जब चंद्रमा पर हिंदुस्तानी उतर कर आएगा और तिरंगा मशीन, तिरंगा रोवर, एक सेकंड वाक्य तो पूरा करने दो। तिरंगा रोवर नहीं फैलाएगा, तिरंगा हिंदुस्तानी फैलाएगा। और वही सावरकर जी को हिंदुस्तानी वाक्य जब बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद चाहता हूँ। I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in this magnificent new Parliament building. Madam, today I stand before you to celebrate our country's historic achievement in the field of space exploration and with the success of Chandrayaan-3's soft landing in the yet unexplored South Pole terrain of the Moon, thereby making us the first country in the world to do so, and the 4th country in the world to reach the Moon. Close on the heels of the Chandrayaan success was the historic launch of Aditya L1. Both these missions have showcased our indigenous technological prowess and made every citizen of the country proud indeed. However, in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, we cannot alone take this glory, and we have to share it with the rest of the world. This achievement is a testament to our Honorable Prime Minister's dedication, perseverance, ingenuity, commitment to advancing scientific knowledge and space technology, his exemplary proclivity for taking bold decisions, and last but not the least, to the diligence and unwavering spirit of the scientists and engineers of ISRO. The Indian space research and its ecosystem have been in an upbeat mood
Since the Honourable Prime Minister announced space sector reforms with enhanced participation of private players in the Indian space program and also approved the Indian space policy in 2022. The success of the Chandrayaan-3 has been the logical extension of a series of key missions undertaken by ISRO in the last decade and will be followed by many more ambitious projects, to name one, Gaganyaan, in the future under the visionary leadership of Honourable Prime Minister. In 2017, PSLV C-37 created a world record by successfully placing 104 satellites in orbit in a single launch. The new Space India Limited, NSIL, launched in 2019, has presently signed 19 technology transfer agreements and successfully transferred 8 ISRO-developed technologies to the Indian industry. In 2022, Vikram S Prarambh mission, a suborbital launch vehicle, was launched successfully and became the first privately built rocket launched in India. ISRO, in the last 9 years, has launched 52 launch vehicles and 57 spacecraft missions. Chandrayaan-3's success has established our country as part of an exclusive club alongside the US, Russia and China, and has enhanced our global reputation as a serious player in the field of space exploration and R&D. It will also have a domino effect, leading to international collaborations, joint global space initiatives, knowledge exchange, and fostering closer ties with other nations, leading to further advancements in space technology. Madam, currently India contributes around 2 to 3% to the global space economy, which is expected to increase to 8 to 10% in the next decade. Our astute Honourable Prime Minister recognized the benefits of space technology and has expanded its usage to 60 line ministries for improved governance. Even during the COVID outbreak, the navigation and geospatial technologies were used efficiently to coordinate relief deployment. India has joined 5 nations capable of adopting navigation satellite system capacity. The Indian Regional Navigation Satellite System, launched by Honourable Prime Minister in 2015, has helped save the lives of fishermen amid extreme weather conditions. India already has more than 140 startups, and the successful lunar mission will provide a huge boost to them. It will establish India's position as a cost-effective satellite launcher benefiting aerospace and defence sectors. The Chandrayaan mission will inspire and captivate the imagination of the youth and encourage them to pursue careers in science, technology, engineering and math. Also, several rural space labs are being set up in schools across the country to foster interest in young minds vis-a-vis space studies. It will open up a wave of opportunities for several sectors, which will boost our economic growth, help us achieve our objective of Atmanirbhar Bharat, and bring us closer to achieving Honourable Prime Minister's vision of becoming the 3rd largest economy in the world. Now, I just want to put in a point that we as a civilization have always been curious about the stars and planets. And Puranic literature tells us that in ancient India we had the knowledge of astrophysics, sophisticated understanding of astronomy, which was also called Nakshatra Vidya, the science of the stars, and we were able to accurately predict eclipses, motions of the planets, and use this knowledge in Vedic astrology, from Aryabhat to Vikram Sarabhai, Dr. Homi Bhabha, or Nambi Narayanan. We have a galaxy of legends in the field of space studies to be proud of. Now that our Honourable Prime Minister has firmly established himself
on the world stage as a leader of leaders. It is no wonder. It is no wonder, ma'am, 1 minute, that he has shifted his sight on the stars, and let me assure you, he will conquer the field there too. And my very best to the extraordinarily gifted, diligent, motivated scientists and engineers, and the Honorable Prime Minister creating a conducive and encouraging climate for our space research program to reach new heights. As in his words, as he said, the sky is definitely not the limit for the Indian space sector. I wish them the very best. Thank you, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion. Madam, it is really a proud and prestigious moment to all Indians. On 23rd of August 2023, in the history-making soft landing of Chandrayaan-3 in the moon's south pole. Madam, we salute the Indian scientific community, in particular ISRO, for having achieved this historic success in space technology. Madam Chairperson, 13 scientists, including the chairman of ISRO, they are the former students of the TKM College of Engineering, wherein my constituency is there. 13 scientists who are part of the mission, including the chairman, Mr. S. Somnath, each from the TKM College of Engineering, a well-reputed, prestigious college in the state of Kerala in my constituency. And that is being installed, that is being instituted by a learned person, Sri Tangal Kunju Musliar, in the year 1955. Madam Chairperson, when Chandrayaan-3 successfully landed on the moon, 1.4 billion people of India was in full joy and triumph in its making history. Through this landmark achievement, India's space agency ISRO became the first space mission in the world to land near the south pole of the moon. Madam Chairperson, the remarkable achievement of ISRO not only underscores the powers of Indian scientists, but also highlights the extraordinary journey of scientific development that India embarked upon since the establishment of ISRO in the year 1962. Further, it showcased India's technological capabilities and its visionary approach towards leveraging science and technology to address various other areas of development. Our moon mission is always having a human-centric approach. That is why immediately after the landing, soft landing, Honorable Prime Minister has said, this success belongs to all humanity, not to any individual or not to a particular community or a country. Madam, the roots of modern India's scientific journey is from the days of great visionary leader Pandit Jawaharlal Nehru. It can be traced back to the establishment of Indian National Committee for Space Research in 1962, that is INCOSPAR. That was INCOSPAR. INCOSPAR is subsequently renamed as ISRO in the year 1969. ISRO steadily evolved from its modest beginning, achieving a series of milestones that illuminated the nature's scientific landscape. Madam, on October 22nd, 2008, India's first lunar probe was launched by ISRO. It carried 11 scientific instruments to study the moon's surface, mineral composition, and the presence of water molecule. The result was the discovery of water molecules on the lunar surface, indicating the possibility of water ice in polar regions. Further, it identified the presence of magnesium, aluminium, silicon, iron, and titanium on the moon. And Chandrayaan-2, I am not going to the details. Madam, coming to Chandrayaan-3, a testament to ISRO's dedication to exploring new frontiers. The lunar lander Vikram consists of 3 parts: lander, rover, and the propulsion module, which provide the spacecraft to traverse 384,400 kilometers wide between the moon and the Earth. Thereby, India has become the 4th nation to achieve this after US, Russia, and China. Chandrayaan mission cemented India's global status as a superpower in the space. ISRO's accomplishment demonstrate how investment in scientific research can yield both knowledge and technological advancements with far-reaching impacts. What are the impacts of the mission? Madam, 4 main impacts. Number 1 is the healthcare. Number 2, the climate change mitigation. And number 3, the security. And number 4, one is the national well-being. So, Madam, the fusion of science and technology has catalyzed the transformative revolution of the healthcare, like telemedicine, and bringing the service of the expert healthcare professionals even to the remotest part of our country.
In the area of climate change, India's strategic alignment of science and technology assumes paramount importance. And that too in the case of sustainable development adopted by the UN resolution in the year 2015. And we are commitment to honor them. We have to honor the commitments made in the UN as far as the sustainable development is concerned. Madam, national security demands a multi-phased approach rooted in innovation. So, Madam, the realm of science and technology is intricately linked to its educational ecosystem and its ability to nurture a culture of curiosity, learning and innovation. India's educational institutions and research centers plays a pivotal role in cultivating a skilled workforce and fostering a spirit of inquiry. Initiatives that promote STEM, that is science, technology, engineering and mathematics, have the potential to propel India further on its scientific journey, for which I urge maximum budget allocation has to be provided in the field of research and innovation. The present budget allocation is not sufficient to meet the purpose. And one more suggestion I would like to make, as far as the private sector is concerned, what is the amount being spent for research and innovation and development in the field of research and innovation? It is negligible amount being spent by the private sectors. It is everything is from the public sector. Definitely, once again, I would like to take this opportunity to congratulate the scientific community, in particular the ISRO and also the college from whom most of the members have already pointed out. Most of this engineering faculty is from the aided colleges or the government colleges. So once again, I take to congratulate and salute all the scientific community, in particular ISRO. Thank you very much, ma'am. Shri C. Thomas ji. Shri C. Thomas ji. उतना पीछे आ गया कि बैठ Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. As a representative of Kottayam Parliamentary Constituency and a member of the Kerala Congress EM, I congratulate the scientists of Indian Space Research Organization and other crew members who contributed to success the Chandrayaan-3 mission. The whole country is proud of you. In a lighter vein, I must mention that most of the scientists, including the ISRO chairman, Dr. S. Somanath, are from my state, Kerala. The VSSC Thiruvananthapuram director, Dr. Unnikrishnan Nair, who also was a part of this mission, and he belongs to my constituency and he hails from a small village called Kodanallur in my constituency. He also had his studies in Malayalam medium schools and also had the local college where he has studied in the primary level. Sir, most of the alumni of the College of Engineering at Trivandrum, then TKM College of Engineering, Kollam, as well as the Kodamangalam, MA College of Engineering, Kodamangalam. 55 members of that alumni from MA College of Kodamangalam were part of this mission. Sir, that way Kerala has a glorious and prestigious position in the success of this historic mission. Sir, having said that, I want to raise a few other issues which are affecting the scientist community in India at large. First, apart from ISRO, there are so many other institutions which contribute to scientific research in India. If you want to grow in science and development cutting edge technology, we have to make sure that the institutes other than the premier agencies like ISRO also get enough funding and other support. However, the data tells us that the data which gives us is a complete different story. The expenditure on research and development as a percentage of GDP was
0.71% in 2013-14, which has now got reduced to 0.64 in 2021. Importantly, the most of the countries who are leaders in the field of technology and scientific advancement, the expenditure in research and development as a percentage of GDP is more than 3%. Sir, second, I would like to point out one more fact that in 2022, the GST rates on scientific and technological instruments to research institutes was raised from 5% to 18%. The overall impact of this decision is a reduction in the research and funding of government by two other scientists also have to pay more taxes for their laboratory instruments. I urge upon the government that the scientific and technical instruments supplied to research institutes should be exempted from GST. Third, recently the Ministry of Education and Department of Science and Technology have issued a GO to increase the fellowship amounts for junior and senior research fellowships. After 4 years of struggle of the researchers community, the increase in the amount was only 20%, sir, which is nothing in comparison to the inflation ratio. Sir, even the parliamentary panel has recommended a 60% revision in the fellowships and a minimum of 50,000 rupees. But now the government has come out with 37,000 rupees only. So the government has to understand that the scientists involved in the research are not to be treated as students. Most of them are in the age bracket of 25 to 35, and they have the responsibility of their families. So I would request the government to revise the fellowship amount from 37,000 to 50,000 as recommended by the parliamentary committee panel. Sir, while we celebrate the success of Chandrayaan-3 and the successful missions of ISRO, we must not forget that that in order to become at par with the developed economies in terms of scientific and technological advancements, the government has to provide enough funding and support to the scientist community. Thank you, Madam. Shri B. Mahtab ji. Good morning. My good friend Honorable Shashi Tharoor ji, Honorable Prem Chandran ji, other friends from Kerala are saying he belongs to my constituency, scientists belong to their constituency. Good, but they are proud Indians and all of us are proud of them. And the second thing which they need also to acknowledge, that after doing the successful mission of Chandrayaan, they went to Tirupati temple and they went to other temples also to offer their greetings and pranam. In fairness, they also ought to have said that. Shri B. Mahtab ji. Exploration of space has been one of the most challenging and fascinating ventures of humankind and continues to capture the imagination of generations. Over the ages, several spacefaring nations have undertaken numerous missions to explore the solar system, their natural moons, various minor planets, asteroids, comets, and even interplanetary voyages. Some 150 years ago, in the 19th century, an astronomy knowledgeable person named Samanta Chandrasekhar could map and tell us accurately what is the distance between the Earth to that specific planet. And this was confirmed by the astrophysicist of Calcutta University. And he wrote in Sanskrit Siddhanta Darpan, and he belongs to Odisha, to my constituency Khandpada, and that is the present planetarium
is named after him. So this is all indigenous. हमारी भारत की विद्या के कारण ये सारे चीजें उनके पास था और वो भी उसको प्रमाणित करते थे. आज जिस बारे में हम आज दिन भर चर्चा कर रहे हैं, सारे मेंबर्स, this house is in one voice congratulates Indian scientists for their endeavor. That what we achieved on 23rd August 2023 is a very rare feat which was done by moon warriors. I'll just give two instances, madam. 84-year-old Palanival Vera Muthival, who studied in the Vilupuram Railway School before completing engineering degree from Chennai College and M.Tech from an institute in Tiruchirappalli. He shifted to ISRO in 2014 as project director for Chandrayaan-3. For the past 4 years, on the slender shoulders lay the enormous weight meeting the nation's space expectation. This House salutes him and hundreds of Indian space scientists and engineers who have worked tirelessly to make the moon mission a success. Just remember 4 years ago, on September 6, 2019, he and hundreds of other scientists had to watch the Chandrayaan-2 lander spin out of control 800 meters above the lunar surface and then lose all telemetry contact with the mission control as it crashed on the moon surface. It would fall on the then ISRO chairman, Mr. P. Sivan, to break the gloomy news to Prime Minister Narendra Modi, who was in the visitors' gallery to watch the landing and who had to console Sivan on his shoulders. Dr. S. Somnath, then the director of Tiruvananthapuram-based Vikram Sarabhai Space Center, was there. And I had the good fortune of interacting with both Mr. Sivan, who was then the ISRO chairman, and also with Dr. Somnath, who was the director of the Vikram Sarabhai Institute at Tiruvananthapuram. When a parliamentary committee, I was a member of that, we visited that institute and we could understand the difficulty in which they have been making progress. 4 years later, this tall, fit and unflappable Somnath would once again find sitting in front of the console of Mach 2 as ISRO chairman as the countdown began. Failure is the pillar of success. Our scientists learned from failure. PM Modi encouraged them, and that is why during these 4 years the success has been achieved. The leadership quality of our Prime Minister definitely enthused our scientists to a very great extent. Otherwise, it would not have been successful. They took no chances. ISRO chairman Dr. S. Somnath says, failure gives you much more understanding than success. Having reached the moon, ISRO is now trying to find its place under the sun. Now Aditya L1 spacecraft is in its long journey. In all these missions, ISRO is focusing on doing what it does best, that is technological innovation in a cost-effective manner. When we compare the expenditure that is being made by European Union or by United States, NASA, or even by China, our investment, our expenditure is comparatively much, much less. The process of synergy is happening, and in just 3 years, we have more than 150 private startups
in the space sector. It is not only the government which is investing, it is private investment which is very important if India's space sector has to expand rapidly. It cannot depend on government funding only. India is emerging in the new global order, and in that respect, I believe today, when the Parliament is deliberating on this great mission of our Indian scientists, we should not forget. We should not forget that we also are having adequate support and interaction with the NASA scientists and also the scientists of other scientific societies. And the world looks up to Chandrayaan-3 with great anticipation, expectations and hope, and at the same time waits for it to uncover many more new features and mysteries of the moon and the universe. Thank you, ma'am. Shri Soumitra Khan ji. Thank you, sir. Thank you, madam. Give me opportunity for speaking the ISRO and Chandra Vision. मैं पहले मेरे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे जो उसी का समय में ये समय जो समय है सही समय है और उसके साथ पूरे इसरो का जो साइंटिस्ट है सबको धन्यवाद क्योंकि एक जब जन्म के बाद हमारा बंगाल में कहावत है आय चांदा मामा टीप दिए जा तो आज जो बचपन में सुना था वो आज हमारा भारत चांदा मामा का जाके चंद्रा विजन हो गए सक्सेसफुल हो गया आज हमारा जो सपना था हमारा जो इच्छा था आज पूर्ण हुआ तो मैं बहुत सारे बात सुनेंगे लेकिन हमारा टाइम नहीं है तो पहले एक होता है जो इंस्पायर हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी बात है जो आगे बढ़ो कुछ करो और वही सफलता है आज चंद्रा विजन का आज हमारा 142% ज्यादा 2013-2014 में जितना सारे एक्सपेंसेस होते थे जो बजट था इसरो का वो हमारा बजट है आज 12,000 करोड़ के आसपास तो हमारा यही सक्सेस है जो 5,615 करोड़ खर्च था वो आज 12,543 करोड़ 10 साल में हुआ है उधर हमारे एक बहन बोल रहा था ऊपर जो काम कर दिया वो बात नहीं है ये मोदी जी का समय में सबका विरोध है ये इतने अच्छे संसद में हम लोग बैठे हैं जब भिस्ता वो हो रहा था बोल रहे इसमें ही चलेगा ये नहीं करना चाहिए जब आज बैठा है बोल रहे अच्छा है जब सेकंड चंद्रा विजन हमारा फेलियर हो गया उस टाइम विरोधी पक्ष बोल रहे थे वो कुछ नहीं होने वाला है हमारा एक पश्चिम बंगाल का एक चीफ मिनिस्टर भी खड़े होने तैयार था उधर फेलियर होगा वो बोलेगा प्रधानमंत्री से कुछ नहीं होगा लेकिन देखिए पूरा भारत चाहते थे ये सक्सेस आज वो सक्सेस हम लोग को मिला है हमारा पहले जब डिजिटल इंडिया हुआ था जब जैसे पेटीएम डिजिटल कैसे होगा मैं बहुत सीनियर लीडर से सुना हूं बोले कैसे होगा एक सब्जी वाले कैसे आपका पेमेंट लेगा डिजिटल में तो आज सब्जी वाले पेमेंट ले रहा है डिजिटल में यही है आधुनिक भारत जो हमारा स्वामी जी बोलते थे जो आधुनिक भारत श्रेष्ठ भारत यही समय है जो श्रेष्ठ समय है जो प्रधानमंत्री जी का अमल में आज 23 अगस्त साउथ पोल में जो इतिहास रचना रची है जो भारत का विश्व मित्र भारत का विश्व गुरु मोदी जी का नेतृत्व में जो G20 में सक्सेस हुआ अब पहले बोल रहा था कैसे करेंगे कहां हॉल है 125 कंट्री का कौन कहां पे बैठेगा आज देख लीजिए पूरा भारत देश का नरेंद्र मोदी जी आगे जा रहे हैं और सब राष्ट्रप्रधान पीछे जा रहा है सब बोल रहे हैं मोदी जी वहां आगे बढ़ो आपके साथ हूं और पहले हम लोग का बात है अमेरिका नासा को देख के बोलते थे अरे नासा सब कुछ कर पाएंगे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन आज जितेंद्र जी है हमारा मिनिस्टर भी इतने अच्छे वहां पे जाके जो उद्घाटन किया है
सबसे बड़ी बात है, जो सक्सेस को देखना चाहिए, सिर्फ देखने के लिए सिर्फ इच्छा होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी का है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जो स्टार्टअप में आज इसरो के साथ 140 स्टार्टअप जुक्त है, उसके साथ इसरो का फायदा भी होगा और इसरो का साइंटिस्ट को भी आगे बढ़ेगा। हमारा बंगाल का स्वतंत्रनाथ बसु, जो हमारा बसु विज्ञान मंदिर हम मांगेंगे, हमारा जितेंद्र जी बैठा है, हम मांगेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल से बहुत सारे साइंटिस्ट आज हमारा इसरो में काम कर रहे हैं। बंगाली का हमारा इज्जत बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाली हम लोग बंगाल से आते हैं। हमारे बंगाल का जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जादवपुर बोलिए, खड़गपुर IIT बोलिए, दुर्गापुर NIT बोलिए, मेरा पत्ता सर का भी एक साइंटिस्ट भी है उधर जो काम कर रहे हैं, उधर अच्छे काम कर रहे हैं। मैं ही बोलेंगे, जो आज एक सिनेमा हॉलीवुड बॉलीवुड में बनती है तो 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और बंगाली आज हमारा पूरा इसरो का साइंटिस्ट को मैं सलाम करता हूं। मैं आज उसको बहुत अच्छे धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज सिर्फ 600 करोड़ में आज प्रणाम करता हूं, जो 600 करोड़ में जो आज को इतने आगे बढ़े और भी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक गीता में एक बोलेंगे, जो महाभारत में सब कुछ है, जा नहीं भारत है ता अच्छे सभी महाभारत है। आज हमारा गीता आज पूरा विश्व को दिखा रहा है कि कैसे उसको देख के हम लोग आगे बढ़े। हम लोग भारत को भारत माते बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में इसरो तो आगे बढ़ेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेंगे। हम लोग मेक इन इंडिया हुआ, हम लोग आत्मनिर्भर भारत हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे। मोदी का नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। श्री रविंद्रनाथ कुमार जी, किधर है रविंद्रनाथ कुमार? ओ अच्छा। Chairperson, Madam. Madam, at this historical era, when our nation has completed the 75th year of its independence, our nation have made several successful landings under our honorable leader, Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. Madam, we have successfully landed into the magnificent new parliament building, which will be privy to several landmarks decisions in its journey. And the successful presidency of G20 under our Honorable Prime Minister ensured the successful landing of the several most powerful world nations into our country. The G20 New Delhi Summit evidenced our nation's collective power and showcased our diversity and prosperity to the rest of the world. History was set when the lander model of Chandrayaan-3 set foot on the moon. India became the first nation to reach the unexplored south pole of the moon in the world, and it doesn't matter who lands second, and the whole world congratulated our Honorable Prime Minister when Bharat earned a place in record books. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, leaves a legacy not only to our nation, but to the many several world nations which aspire to become space power. I wish to take this opportunity to congratulate the ISRO chairperson, S. Somnath, project director, Veera Muthuvel, deputy director, Kalpana Halahasti, VSSC director, S. Unnikrishnan Nair, and Sankaran Srikant, the former chairman of ISRO, and Sivan, and the entire team of heroes behind the historical mission, ma'am. Ma'am, apart from contributing with the expert project management team from Chandrayaan-3 mission, I am delighted to say that from Tamil Nadu, in the district of Namakkal, has contributed to the mission with the supply of soil for testing the Chandrayaan mission capacity. And finally, I finish in 1 minute, ma'am. I am equally proud that Tamil Nadu is home to many top scientists of the world, notably Sir C.V. Raman, astrophysicist Radhakrishnan, S. Chandrasekhar, who later on called as mathematician Sri Srinivasa Ramanujan, and notably our former president Bharat Ratna APJ Abdul Kalam, who was also the project director
of India's first SLV rocket. And finally, I conclude with the vision, our vision of our Honorable Prime Minister shall help in expanding our space sector, further contributing to the overall progress of the country. I hope that our country will leave an even more prominent mark on the history of space travel and India's human space missions in the coming years. Ma'am, after achieving its target at present, the Chandrayaan lander is in sleeping mode. I wish this week, anytime again, it will come to backup mode. With this, I conclude, ma'am. Thank you. माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास वक्ताओं की लंबी सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। श्री बदरुद्दीन अजमल जी। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले इस मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसरो के तमाम उन साइंटिस्टों को और छोटे छोटे वर्करों को जिन लोगों ने इस मामले में इतने सालों से मेहनत की और रिसर्च करके इस मौके पे हमको पहुंचाया कि हम लोग चंद्रयान 3 के ऊपर पहुंच पाए। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसको नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने आगे बढ़ाया और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अब इसको पूरा किया। मैं उसको दिल की गहराई से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर उन जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद यहाँ तक लोगों को, साइंटिस्टों को इसका मौका नहीं मिलता। मैं आसाम से आता हूँ सर, मैडम, और वहाँ के हमारे 2 बच्चे जो इसरो में हैं, एक है नाजनीन यास्मीन, एक है डॉक्टर बहारुल इस्लाम। ये चंद्रयान 3 के मिशन में काम करते हैं। मैं इसलिए उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और साउथ इंडिया के उन तमाम साइंटिस्टों को जो इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरे साउथ इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं। मैं उन सब साइंटिस्टों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, मुल्क को ऊंचाई के ऊपर ले जाओ। हम तुमको सलाम करते हैं। मैडम, इसी के साथ मैं अपने मुल्क की, जब हम चांद पे जा रहे हैं तो हमें नीचे भी देखने की जरूरत है। जिस जमीन से हम जाते हैं मैडम, आज भी हमारा मुल्क पूरे दुनिया के एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी लाखों लोग गरीब सोते हैं, भूखे सोते हैं। मैडम, बच्चे पढ़ने के लिए उनके स्कूल नहीं है। लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके पास स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। मैडम, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि उन बच्चों को, उन माओं को कैसे हम रोटी पहुंचाएं, कैसे उन भूखों को खाना पिलाएं। हम चांद पे जरूर जाएं। इसलिए दूसरी तरफ मैडम, मैं आसाम से आता हूं। मेरा आसाम, मैंने कल भी कहा, फ्लड और इरोशन से जूझ रहा है। मेरा क्षेत्र धुबड़ी, वहां फकीरगंज है मैडम, और बोरपेटा है, वहां पूरा इलाका का इलाका टूट रहा है। लाखों बीघे जमीनें चली जा रही है, हजारों लोगों के घर बह जा रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। मैडम, चांद, जब आप आसाम से, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप चांद पे जाएं और लोगों को भेजें। मुबारक हो, लेकिन इन गरीबों की तरफ, पूरे मुल्क में जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। निवाल जी, आपके लिए सभापति महोदय, सदन में आज चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, बल्कि ऐसी जगह पर उतरने में भी सफल रहा जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, अमेरिका चांद पे जा रहा है, रूस जा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन हमने चांद की उस जगह पे कदम रखा। उस दिन जब चंद्रयान चांद की सतह पे उतर रहा था, और वो पल जो 1 घंटा लास्ट का था, 1 घंटे से फिर 30 मिनट, 29, 28, 27, 1 मिनट 1 सेकंड, इतना जबरदस्त उत्साह देश के हर बच्चे के अंदर,
4 साल से लेके 3 साल से लेके बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, जवान सब टेलीविजन के सामने थे, कोई फोन लेके बैठा हुआ था और उस इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि भारत आज विश्व का पहला देश बना। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें हमारा जो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को न केवल हमारे देश ने बल्कि दुनिया ने, इसे गर्व की बात है। मैं प्रधानमंत्री सहित हमारे मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आज उन्होंने इस पर चर्चा कराई। वैसे 193 में चर्चा होती, लेकिन आज इस पर विशेष रूप से ये चर्चा कराई और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां उतरते ही कहा था कि इंसान के लिए छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है और विश्व के अंतरिक्ष में ये वाक्य लगभग कहावत में बदल गया। सर्वोदय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना से लेकर अब तक इसरो के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे और काम कर चुके कर्मयोगी कार्मिकों की मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, उसे पूरा देश गौरवान्वित है। आज जब इस महत्वपूर्ण उपलब्धि विषय पर चर्चा हो रही है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस सफलता की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिले और उच्च शिक्षा में जब इस सेक्टर में आगे बढ़े सरकार की तरफ से उनके शैक्षणिक खर्च पूर्ण रूप से कैसे वहन किए जाए, इस दिशा में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सर्वोदय चंद्रयान की जो सफलता हासिल हुई वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की सफलता तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम और इसरो की स्थापना लेकर अब तक इसरो की यात्रा में वहां के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम का परिणाम। लेकिन भाजपा इस सफलता को ऐसे दिखा रही है कि जैसे ये उनकी व्यक्तिगत सफलता है। ऐसे मामलों का राजनीति नहीं करें तो अच्छा। हम सब इसमें आपको बधाई देते हैं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, इस देश आगे बढ़े, इसी का परिणाम है कि हमें विश्व में सबसे पहले सफलता मिली। देश की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी। फरवरी 62 में ही अंतरिक्ष अनुसंधान के राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसके सदस्यों में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता वर्षों की मेहनत का नतीजा। सर्वोदय भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरुआत से की और आज विश्व के सम्मुख एक विशाल उदाहरण स्थापित कर देखा। अगर आप बीते 6 दशक पहले जब भारत ने इस यात्रा को शुरू किया उस बारे में याद करें, उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन लगभग चंद्रमा की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। तब हम सोचते थे इन बातों को। इसके बाद के समय से अब तक के भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जितनी तीव्रता के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इससे जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा और योग्यता रही होगी। मुझे गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक किसान की बेटी, मेरे समाज की एक बेटी जिसका नाम सुनीता खोकरे, चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो की टीम का हिस्सा थी। सवाद महोदय, चंद्रयान पर भारत के मानव अभियान को लेकर उम्मीद बढ़ी क्योंकि सफलता आपके कार्यकाल में मिली, ये सही है। लेकिन जब बात नीतिगत सवालों की आती है सरकार को अपनी विफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। सवाद महोदय, मैं कोई इश्यू से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व बचा रहे। आज विषय अलग है, फिर मैं कहना चाहूंगा बढ़ती महंगाई को रोकने में, स्थायी रोजगार देने में सरकार नाकाम रही, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। सौदे में लास्ट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के उत्साह और उनकी मेहनत से जो सफलता हमारे देश को मिली, उस सफलता में वैज्ञानिकों का उत्साह शामिल था, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामले में आपकी सरकार ने देश की सेना और युवाओं को सेना में अग्निपथ नामक संविदा भर्ती की योजना को लाकर जो किया है, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध ऐसी योजना को वापस लिया जाए ताकि सेना का उत्साह बरकरार रहे। एक सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी पे चर्चा हो सदन के अंदर, पूरे देश का नौजवान जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया। दूसरा, एक चर्चा महिलाओं, जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, महिला आरक्षण आप ले आए, उसका हमने सबने धन्यवाद आपको दिया था। जैसा भी आप लाए अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो करी। आगे ये भी बैठे थे कई साल, ये भी नहीं ला पाए, आप लाए। लेकिन महिला अत्याचार जो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा भी सदन के अंदर पूरे दिन होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आपने मुझे मौका दिया, मैं पुनः इसके हमारी भारत जो आगे बढ़ा है इसको बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलजुल के चाहते हैं कि देश और दुनिया के अंदर राजनीति से ऊपर उठकर हम देश के विकास की सोचें। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस चंद्रयान 3 के यश गाथा में चर्चा में सहभागी लेने के लिए परमिशन दी। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि
एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इस नवनिर्मित भव्य संसद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और वो इस विषय पे जिस विषय से इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। आज के ये चंद्रयान 3 के चर्चा में हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करते हैं, जिन्होंने 2003 में चंद्रयान की घोषणा की थी, और उनके विश्वास और संकल्पों को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूंगा। वाकिफ कहां जमाना हमारे उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, रखकर चांद पर कदम आज हमने इतिहास बना दिया, जिनको शक था हमारी काबिलियत पर आज उन सबको गवाह बना दिया। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 का यह यश हमारे जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान का जीता जागता उदाहरण है। चंद्रयान 3 का यह यश सिर्फ विज्ञान का प्रतीक नहीं, लेकिन यह नारी शक्ति का भी प्रतीक है, जिसमें 100 महिलाओं ने साइंटिस्ट और इंजीनियर होकर इस चंद्रयान 3 की यश गाथा में अपना सहभाग लिया। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कल पारित किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्हीं महिलाओं को भारत के विज्ञान की आवाज इन संसद में उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और अब वो दिन दूर नहीं कि कुछ सालों में इस देश का स्पेस मिनिस्टर एक इसरो की महिला अपने विज्ञान के माध्यम से इस देश को अवगत करेगी। माननीय सभापति महोदय, बचपन में स्कूल में हमें चांद से लेकर 2 ही सवाल पूछे जाते थे, फर्स्ट मैन ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री ऑन मून। उसके जवाब हमें याद हो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और रशिया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश के बच्चे को पूछा जाएगा कि विच कंट्री लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून फर्स्ट, वो देश का बच्चा गर्व से बोलेगा भारत। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और महाराष्ट्र का योगदान इस चंद्रयान 3 अभियान में बहुत बड़ा है। इस चंद्रयान 3 में लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स एंड सैटेलाइट थ्रस्टर्स गोदरेज के माध्यम से बनाए गए, जो मुंबई में स्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की गाथा बताते हुए GSLV Mark 3 की कोटिंग सांगली जिले में डैजल डायनाकोट से की गई है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का स्वप्न पूर्ण करते हुए बीड़ जैसे दुर्गम जिले के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम दत्ता बीड़कर है, वहां पे एक जूनियर साइंटिस्ट बोल के काम करके चंद्रयान 3 की यश गाथा में शामिल हुआ। यह मुंडे जी का सपना हम पूरा होते हुए चंद्रयान 3 के माध्यम से देखने को हमें मिला है। आज की ये चर्चा में हम अपेक्षा कर रहे थे कि सब इसमें सकारात्मक भूमिका निभाए, सब हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ करें, लेकिन कुछ लोगों की आदत राजनीति लाने की जाती नहीं है। और इसीलिए पिछले 50 सालों से आज जो विपक्ष में बैठे हैं, एक चांद के माध्यम से कविता बहुत खूबसूरत उन्होंने बताई थी। मुझे वक्त बहुत कम है तो मैं कविताओं के माध्यम से ही अपनी बात रखूंगा। एक कविता थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। 50 साल से इन्होंने देश को यह बताया कि चांद बहुत दूर है, और ये वही लोग हैं जिन्होंने चांदी के थाली में खाना खाया, लेकिन गरीबों के प्याली में पानी देने की हिम्मत इनकी हुई नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने गरीबों का उद्धार किया और जल जीवन मिशन के माध्यम से आज पानी देने का काम हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 2 2019 के जो टीवी पे विजुअल्स थे, वो हम कैसे भूलेंगे। जब हम टीवी पे देख पा रहे थे कि चंद्रयान 2 के नॉन लैंडिंग की वजह से हमारे इसरो के चेयरमैन हताश थे, साइंटिस्ट हताश थे, तो देश के एकमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो स्पेस सेंटर में जाके उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको उम्मीद दी, और वो वही हौसला था जिसने चंद्रयान 3 की नींव रखी। आज उस जो हौसला, जो जज्बा उन साइंटिस्ट में निर्माण हुआ, उनको मैं उन कुछ पंक्तियों में रखना चाहूंगा कि ए चांद तेरी जिद के आगे क्या मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, तू खाब परे रख दे अपने मैं फिर से वापस आऊंगा,
तू दूर भले ही है मुझसे पर पास कभी तो आऊंगा, है प्रेम अमर मेरा तुझसे मैं उसको छोड़ न पाऊंगा, उस बार चलेगी जिद मेरी तुझको भी याद दिलाऊंगा, तू खा परे रख दे अपने में फिर से वापस आऊंगा। और इसी हौसले से ये चंद्रयान 3 की तरफ हम बढ़े और हम यशस्वी भी हुए। सभापति महोदय, साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है और एक कहावत है कि साइंस टीचर्स अस टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन ये स्टेटमेंट विपक्ष को लागू नहीं होता जो अपनी गलतियां सुधारने के लिए नहीं लेकिन बार बार गलतियां करने के लिए जाने जाते हैं, और आज यहां इस सदन में वो साइंस की दुहाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 3 के यशस्वी लॉन्चिंग के बाद आज संगठित भारत, सामूहिक भारत सन मिशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा भारत का सन मिशन ये SUN ये सन मिशन है, और दूसरी तरफ देश में I.N.D.IAA ये इंडिया SUSON ये सन मिशन को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, जो सन मिशन बार बार लॉन्च होकर फेल हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा SUN भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सन मिशन ये यशस्वी होगा, इसकी हमें पूरी तरह से विश्वास है। आपके माध्यम से आज इंडिया नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में सहभागी हुआ है। इस आर्टेमिस अकॉर्ड के माध्यम से हम देश के द्वारा 2025 में इंसानों को चांद में भेजने का प्रावधान करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि 2024 के इलेक्शन के बाद काफी ऐसे लोग रहेंगे जो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। मेरी विनती है सरकार से कि आपके माध्यम से उन खाली लोगों को 2025 में चांद में भेजने का प्रावधान सभापति महोदय आपके माध्यम से 2024 के बाद किया जाए। तारीखों का अपना अलग महत्व है। 14 जुलाई 2023 ये हमारे देश में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख बताई जाएगी। ये वर्तमान की 14 जुलाई चंद्रयान 3 की यश गाथा दोहराएगी, लेकिन एक तारीख थी जो इतिहास में 14 जुलाई 1942 जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो इतिहास 14 जुलाई का था। और आने वाली 14 जुलाई 2024 ये देश का नागरिक क्विट इंडिया अलायंस मूवमेंट ये देश का नागरिक लगाएगा, और फिर एक बार देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। और अंत में मैं अपने चंद वाक्यों से एक कविता के माध्यम से अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा, जिस कविता के माध्यम से इस चंद्रयान 3 की यश गाथा बयां की गई है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में नगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। श्री बेनी बहनान जी। Sir, thank you, madam. I want to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ മാനവരാശിക്ക് തന്നെ അഭിമാനകരമായ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ വ്യക്തികളെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സർ, ശാസ്ത്രം വളരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ മാത്രം സമഫലമായിട്ടല്ല. ഒരു കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ കർമ്മശേഷിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം വളരുന്നത്. സർ, ശൂന്യാകാശ രംഗത്തും ഈ വളർച്ചയുണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. 959 റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ശൂന്യാകാശ വാഹനം ലൂണ 3 ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതുകൂടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചന്ദ്രസ്വപ്നത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1966 റഷ്യയുടെ ലൂണാർ ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇറങ്ങി. 1969 അമേരിക്ക മനുഷ്യ ചന്ദ്രനിറക്കി. സർ, ഇന്ത്യയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1939 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകി. ആ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ invited leading scientists in the formulation of plan for scientific, technological and economic development of the country. Sir, 1947
സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാഷണൽ ഫിസ്ക്കൽ ലബോറട്ടറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സർ, 1958 നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ പോളിസി റെസൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. സർ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1963 ഇന്ത്യ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് തുമ്പയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. അതന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സർ, ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് ഒരു മാനുഷിക മുഖമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷി, കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യം, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി ശ്രമിച്ചു. നെഹ്റുവിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റു emphasized that science was the key to addressing issues like hunger, poverty, illiteracy and wastage of resources. സർ, 1959 ക്രൂഷ്ചേവ് അയച്ച ആദ്യമായും ശൂന്യാകാശ ദൌത്യം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രൂഷ്ചേവിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്, ദിസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർ, നമ്മുടെ രാജ്യവും 1963 ശേഷം ആദ്യമായി ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യം നടത്തിയത് 1968 ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വാജ്പേയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത്. വാജ്പേയിയാണ് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്. ആദ്യം പേര് സോമയാൻ എന്ന ഋഗ്വേദ പദത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണെങ്കിൽ വാജ്പേയിയാണ് അതിന് ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യം എന്ന് പേര് നൽകിയത്. സർ, 2008 ചന്ദ്രയാൻ 1 ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അന്നാണ് നമുക്കറിയാം നാസയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ജലാശയം ചന്ദ്രനിൽ 1 കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ദൌത്യത്തിനാണ്. ആ ദൌത്യം വിജയിച്ചത്. സർ, അന്ന് 2002 നവംബർ 14 അന്നത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിലൂടെ മൂവ് ഇമ്പാക്ട് കോമ്പിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പതാക ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥലത്തെയാണ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഡോക്ടർ കലാം നെഹ്റു പ്ലേസ് എന്ന് പേരിട്ടത്. സാർ, പിന്നീട് വന്ന ഭരണ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കറിയാം, വാജ്പേയി, അതുപോലെ തന്നെ PV നരസിംഹറാവു, ശ്രീ മൻമോഹൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടേറെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സാർ, 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂവിൽ ആറ്റം കതിരൊളി മിന്നുമ്പോൾ, അന്തരീക്ഷ വികായസിൽ ആര്യഭട്ടൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ, ക്ഷീരപഥത്തിൽ മൂവർണ്ണക്കൊടി വാനിലുയർന്നു പറക്കുമ്പോൾ, ഗോളാന്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാലടിയേറ്റു ധരിക്കുമ്പോൾ ആരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ആരെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം? ജവഹർലാലിനെ, ഇന്ദിരയെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ എന്ന്. സർ, പിന്നീട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ആ പട്ടികയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പേരുകൾ എഴുതി ചേർക്കാം. അവിടെ വാജ്പേയിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മോഡിജിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. സാർ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന് വേണ്ടി ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ചന്ദ്രയാനെ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഉറക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാനെ ഉണർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്നും ഉറക്കം നടിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ഉയർത്താൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നും കണ്ണടച്ചുറക്കം നടിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉണർത്താൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിയട്ടെ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളേക്കും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन
मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई, लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ